बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको वेलकम करता हूँ ऑनलाइन क्लास में। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कॉमन प्रेवलेंट डिजीजेस विद इन पाकिस्तान। इसी को हम डिस्कस करेंगे कि कौन से डिजीजेस यहाँ पे ज़्यादा प्रेवलेंट हैं, कौन से डिजीज से ज़्यादा डेथ रेट है, ज़्यादा लोग किससे अफेक्ट हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इंशाल्लाह होपफुली इंशाल्लाह आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इंशाल्लाह। तो इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बिफोर डिजीज के बारे में पढ़ने से पहले अगेन एक दफा रिपीटिशन कर लेते हैं अबाउट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। व्हाट इज मेंट बाय हेल्थ? सो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, mental and social well-being and not merely absence of disease or illness. Health जो WHO की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो डेफिनेशन है दैट इज कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease or illness. ये पहले भी आप लोगों ने पढ़ा है, इसी को दोबारा बस रिपीट ही किया है कि any state in which there is complete physical, mental, social well-being and not merely absence of disease or infirmity. Then एक लिस्ट आपके सामने है diseases which are more common in Pakistan. इसमें डिफरेंट डिजीज हैं, किडनी डिजीज, कैंसर, डायबिटीज, हेपेटाइटिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस A, B, C. Then hypertension, which is high blood pressure. Then malaria, influenza, eye infections, heart attack, depression, asthma, and jaundice. Jaundice itself is disease तो नहीं है, लेकिन it is a symptom of different types of illnesses such as hepatitis, such as chronic liver disease. तो उनका symptom है jaundice. Jaundice could be from other disorders such as blood related disorders such as different types of anemia can in turn cause jaundice. So एक दफा रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें आपके दोबारा से लिस्ट ऑफ डिजीज में। किडनी डिजीज, कैंसर्स, डायबिटीज, hepatitis, different types A, B, C. Then high blood pressure, which is hypertension, malaria, cholera, influenza, eye infections, heart attack, depression, asthma and jaundice. इसी लिस्ट के साथ आपके सामने एक और छोटे से बॉक्स में पॉइंटर ऑन कर लेते ताकि और ज्यादा आसान रहे। ये डिजीज की लिस्ट है: किडनी disease, cancers, diabetes, hepatitis, high blood pressure, which is hypertension, malaria, cholera, influenza, eye infections, heart attack, depression, asthma, jaundice. इसके बाद ये स्मॉल कॉलम में आपके सामने है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट ही प्रोपोर्शन दिए हुए हैं कि कौन सा डिजीज का क्या प्रोपोर्शन है। जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं which are caused by any infectious agent such as viruses, bacteria, fungus, they account for 40% of the illnesses. Infectious disease are 40% of the total disease burden in Pakistan. Reproductive health problems are approximately 12%. And cancers, diabetes, they account for 10% of the BOD means burden of disease. BOD means burden of disease. So infectious disease account for 40%, reproductive health problems account for 12%, cancers and diabetes accounts for 10% of burden of disease. Remaining में आ जाता है हार्ट अटैक और जो hypertension related disorders हैं they come under the heading remaining
जो आपके पास कंटेंट रह जाता है about 20 to 30%, that is caused by heart attack, heart related illnesses. होपफुली जहां तक क्लियर होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब ये थोड़ा सा ब्रीफ जो डिजीज के अंदर लिस्ट पड़ी है इसके बारे में ब्रीफली आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट बाय हार्ट अटैक, व्हाट इज मेंट बाय डायबिटीज। होपफुली आप लोगों का माशाल्लाह सब लोगों का मेडिकल बैकग्राउंड है, तो कॉमन इलनेसेस के बारे में आपको पता तो है, लेकिन आपका नॉलेज थोड़ा सा रिकैप करने के लिए दोबारा से हम इन डिजीज के बारे में दोबारा पढ़ते हैं। व्हाट इज हार्ट अटैक? हार्ट अटैक इज द डैमेज and death of heart muscles from sudden blockage of coronary artery by blood clot. If the blood supply to the cardiac muscle, heart muscles is stopped, हम अपना टॉपिक दोबारा से यहाँ से स्टॉप हुआ था बिकॉज ऑफ नेट प्रॉब्लम, वहीं से अपना दोबारा से कंटिन्यू करते हैं और आपके साथ शेयर भी करता हूँ स्लाइड्स। ये एक हमने लिस्ट पढ़ी थी अबाउट डिफरेंट डिजीजेस व्हिच आर मोर प्रेवलेंट विद इन द पाकिस्तान, और इसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। There are certain diseases such as heart disease, cardiac disease, diabetes, hypertension, cancers, jaundice, hepatitis, cholera, influenza, eye infections. तो इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने बर्डन ऑफ डिजीज एक टर्म पढ़ी, BOD इसको कहते हैं। बर्डन ऑफ डिजीज इज infectious disease account for 40% of the burden of disease. Reproductive health and health problem account for 12% of the burden of the disease, and cancer and diabetes accounts for 10% of the BOD. And heart attack and hypertension, they cause remaining 20 to 30% of the BOD. Next अभी हम आगे हार्ट अटैक के बारे में शुरू किया था पढ़ना। So that is the sudden blockage of blood supply to the cardiac muscles because of blockage of coronary vessels. Coronary vessels are those arteries which supply the blood to the cardiac muscles. और इसके बारे में आपको पता है they are the end arteries. इनके साथ कोई और कोलैटरल सर्कुलेशन नहीं होती कि अगर एक जगह से ब्लॉक हो जाए ब्लड वेसल तो किसी और तरफ से सप्लाई आ जाए, किसी और ब्लड वेसल से सप्लाई आ जाए. They are end arteries. So once the coronary artery is blocked, there will be no supply of the blood to the cardiac muscle, and ultimately death of the cardiac muscle occur because of lack of oxygen and lack of supply of the nutrients. So number of different causes are there. There could be a cholesterol plaque. जब भी hyperlipidemia होगा, cholesterol level ज़्यादा होते हैं, they start getting deposited within the walls of the blood vessel. Cholesterol deposits within the wall of the blood vessels, causing narrowing of the lumen of the blood vessel. So once the lumen of the blood vessel is get narrow, there will be decreased blood supply to the cardiac muscles. And once the lumen is narrow, there are more chances of formation of platelet plaque. Platelet aggregation होने के chances वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं because of decrease flow of the blood. Blood की speed कम होती है, there are more chances of formation of platelet clot. Clot formation होने के chances और ज़्यादा होता है. When once the clot is formed, there will be complete blockage of the coronary vessels, and once the coronary vessel is blocked, that area of the heart will be having cell death because of hypoxia. Hypoxia is the lack of oxygen
and lack of nutrients. यहाँ तक clear है सब लोगों को? Heart attack occurs because of blockage of the coronary vessels from blood clot, resulting in damage to the cardiac muscles or death of the cardiac muscle because of lack of hypoxia and lack of nutrients. So cause is platelet plaque, deposition of cholesterol within the walls of the blood vessels, causing narrowing of the lumen of the blood vessel, resulting decreased flow of the blood to the cardiac muscle. Decreased blood flow to the cardiac muscle results in the formation of platelet clot formation, platelet clot formation.